Hi friends, welcome back to my channel. I'm Rita back with another video, and this time I'm gonna coming with the depth camera of Poco phone after the latest update. From the update, the camera improved a lot and for the focusing and the processing speed itself. So मैं पहले से इसका जो रिव्यू ऑफ कैमरा में बना चुका हूँ, तो इसका मैं अभी डेप्थ रिव्यू बनाने वाला हूँ कैमरा का अल्टीमेट लेवल में। तो कैमरा का इंटरफेस आपको ऐसे मिलने आ जाएगा। इसका जो कैमरा सेंसर है आपको सोनी का 12 मेगापिक्सल मेन सेंसर IMX360 which is used on the Vivo Nexus and the Asus 5Z also। तो बहुत ही अच्छा सेंसर है वाला। एंड इसका जो सेकेंडरी सेंसर है वो सैमसंग का आता है फॉर द डेप्थ ब्लर एंड 12 फ्लैश आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड फ्रंट आपको आता है 20 मेगापिक्सल वाला सेंसर फॉर नॉट एनी काइंड ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन और एनी काइंड ऑफ सेंसर स्पेसिफिकली मेंशन लाइक अ OnePlus 6 आल्सो। सो अगर आप लोग जैसे नॉर्मल सा जो इंटरफेस ऑन करते कैमरा का, तो आपको ऐसे मोड चला आता है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारा मोड मिल जाएगा, पोर्ट्रेट, शॉर्ट्स, स्क्वायर वाला एंड पैनोरामा। आप लोग यहाँ से बहुत लंबा करके खींच सकते हैं। मैनुअल जो बहुत ही अच्छा फॉर द एडवांस यूजर्स हु यूज देयर कैमरा इन ऑप्टिमम लेवल। तो मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ कैमरा के मामले में अभी तक, तो मैं ये वाला कम यूज़ करता हूँ। मैं अभी भी लर्निंग स्टेज में हूँ ये वाला। तो आप लोग यहाँ से बहुत सारा है, यहाँ पर फोटो एंड वीडियो सीरीज में जाएंगे तो आपको वीडियो का सेटिंग्स मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नॉर्मल सा सेटिंग्स में आता है। आप लोग यहाँ से कैमरा का जो ऐप्स है पोको फोन का वाटरमार्क भी यहाँ से दे सकते हैं एंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका कैमरा परफॉर्मेंस एंड लाइक दिस ऑल्सो। एंड स्लो मोशन वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वीडियोज एंड लाइक दिस ऑल्सो। तो स्लो मोशन वीडियो में हर कैमरा में यही इश्यूज आ रहा है। मेरे OnePlus 6 पे भी ऐसे ही आता है। रात को भी मैं जब भी वीडियो स्लो मोशन ऑन करने जाता हूँ तो ये वाला प्रोग्राम चला आता है एंड जो ब्लिंकिंग होने लगता है। तो इसका स्लो मोशन वीडियो के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइट लगता है। लेकिन पोको F1 या OnePlus 6 में सेम इशू आ रहा है, लेकिन उन के 7 प्लस में मुझको वाला इशूज नहीं आ रहा। तो आप लोग यहाँ से बहुत सा टाइम लैप्स एंड बहुत सा मोशन आपको मिल जाएगा। तो मैं नॉर्मल से सेटिंग्स में चला जाता हूँ, आप लोग ब्लर कर पाएंगे। सो इसका मैं डिफॉल्ट सेटिंग से बहुत सा पिक्चर लिया हूँ, तो आपको दिखाएंगे वाला आपको कौन सा कैमरा कितना अच्छा मिलता है आफ्टर द अपडेट वन ऑल्सो। एंड आई जस्ट लव दिस कैमरा फॉर द प्राइस ऑफ ₹21,000। एंड OnePlus 6 कैमरा ये सब बहुत ही अच्छा। मैं इसका कंपैरिजन रिव्यू करने वाला हूँ OnePlus 6 के साथ या Realme2 Pro के साथ। और आपको एक बार वीडियो चाहिए तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए वाला वीडियो लेकर आने के लिए। एंड इसका फ्रंट कैमरा भी आपको दिखा देंगे। फ्रंट कैमरा भी आपको 20 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगी इसके अंदर में। सो अगर फ्रंट कैमरा चले जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर फ्रंट कैमरा में HDR मोड वाला मिल जाता है, ऑटो वाला। आप लोग फ्लैश यहाँ से भी कर सकते हैं एंड आप लोग ये ब्लर भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्रंट कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरा इसका OnePlus 6 से बहुत ही अच्छा है। मैं कंपेयर कर चुका हूँ एंड इसका कंपेरिजन वीडियो भी आने वाला है। तो आप लोग नीचे इसका OnePlus 6 से पोको F1 में कैमरा फ्रंट कैमरा बहुत ही अच्छा है, लेकिन बैक कैमरा में तो OnePlus 6 सबको ही मार देता है एंड विद इन प्राइस ऑफ ₹50,000। सो मतलब बहुत सारा पिक्चर मैंने डिफॉल्ट सेटिंग्स में लिया है, लो लाइट, आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन, लो लाइट कंडीशन। सो आपको मैं 1 बाय 1 दिखाएंगे। आपको आफ्टर द अपडेट आपको वीडियो कैमरा सैम्पल्स कितना अच्छा मिल जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं। सो कैमरा कितना अच्छा आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन वीडियो ऑफ वीडियो सैम्पल्स एंड कैमरा सैम्पल्स इटसेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
friends, I am Rita back with another video sample, and this video is recording on the Poco F1 and after the latest update and the default settings, and you can get the idea how this is camera perform. And this is the recording on the full HD mode and 240 fps, and you can get the idea how the color combination and the color contrast actually producing itself. And I must say the camera is really perform good for the price of rupees 21,000. And I just love to little bit move up into closing up. You will get the idea how this is fast focusing itself. So I just love to show you this one also. So okay, so the focusing is very fast, and you can see this one also. I just fraction of time it detects my finger itself. So okay, so again I just love to little bit move up, and you will get the idea how. Just love to little bit move up, and you will get the idea how the image stabilization actually working, because there is no OIS, only EIS present, that is electronic image stabilization. And I just love to little bit closer into the trees of mango trees. You can see this one, the color looks impressive, and this is artificial intelligence present in camera, and not a video mode is present, but the boost of the color itself. So okay, so you can zoom up to 8x into this phone's camera. So I just love to do a zoom up to 8x, and you will get the idea how this is actually perform. And the relatives are closing to me, so everything is near to me like this one also. Okay, so how after the zoom you will get the idea how this is actually perform, and lens good, and you can just detect the object also clearly. So I just love to do it again. I just love to do the normal position itself for the camera. So okay, so if you have a doubt, query, question in this video regarding this product, you can ask in the comment section. I love to clarify all of your queries. Hi friends, I am Rida. I'm back with another video sample, and this video is recording on the Poco F1 front camera and 20 megapixel shooter itself. And after the latest update, you can see this one how this camera actually perform in the daylight condition. I'm on my roof in the noon time, and the background color is really good itself. You can see this one also, and the color contrast and color combination and the saturation and all the things is looking good and crisp and clear itself. And I just little bit move up, you will get the idea how this camera interface is actually looking, and how this is installation actually perform in the good lighting condition itself. And I just love the camera of this phone's front camera really compared to the Oneplus-6, and Oneplus-6 camera is not too much powerful front camera compared to the Poco phone itself. So you will get this one also idea. So I am little bit move up, you will get the idea how this actually perform in the good lighting condition. So audio is also recording from the Poco phone itself. So if you have any doubt, query, question regarding this video, regarding this product, you can ask me in the comment section. I love to clarify all of your queries. सो आपको पता चल गया होगा इसका वीडियो सैंपल्स एंड कैमरा सैंपल कितना अच्छा है फॉर द अपडेट ऑफ द प्रीवियस वन ऑल्सो. इसका कैमरा बहुत ही अच्छा हुआ फॉर द अपडेट, एंड फोकस में ज़्यादा अच्छा होता है, पॉजिंग में ज़्यादा अच्छा ही हो जाता है, एंड टैप टू फोकस में भी बहुत कम वक्त लगता है. शटर स्पीड थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन आप लोग जितना पर क्लिक करेंगे तो इसका शटर स्पीड कम होते जाता है फ़ोन का, किसी भी कैमरा का, DSLR हो, मिररलेस हो, या फिर नॉर्मल सा फ़ोन का भी हो. सो यही तक था मेरा इस तक का वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हैं. आपको वाला फ़ोन लेना है तो इसका प्रोडक्ट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग एक वाला बाय कर सकते हो टू द बेस डील ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल फ्रीली हेल्प अस इन द सोशल कॉज ऑल्सो. So if you have doubt, query, question in this video regarding this product, you can ask in the comment section. I love to clarify all of your queries. So this is up to the video. Take care, bye, and love you all. Please subscribe us and promote us and to all friends circle. This is absolutely free.